Highlights of the Kent lecture on the homeopathic philosophy. The discovery of homeopathic philosophy brought an altogether new era of truth, uh, thoughts in the world of practice of medicine. To understand these, we have to have a look on the existing system of that time. इंट्रोडक्शन, तो इसमें हाइलाइट्स में अपन को अलग अलग हाइलाइट्स पढ़ेंगे. पहली हाइलाइट इंट्रोडक्शन की. तो द ओल्ड स्कूल और एलोपैथी कंसिडर अबाउट द सिकनेस एंड मेडिसिन इन द प्रैक्टिकल पर्टिकुलर वे. ओल्ड स्कूल जो है एलोपैथी, वो सिकनेस को और मेडिसिन को पर्टिकुलर वे में कंसिडर करते हैं. द स्पेयर ऑफ सिकनेस वॉज लिमिटेड टू द फिजिकल लेवल. ओनली टिश्यू चेंजेस वर सीन एंड कंसिडर. केवल टिश्यू चेंजेस को कंसिडर करते हैं. द सोर्स ऑफ सिकनेस, प्रोसेस ऑफ सिकनेस, द नेचर ऑफ सिकनेस एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रियल हेल्थ वर नॉट स्टडी. तो सोर्स ऑफ सिकनेस, प्रोसेस ऑफ सिकनेस, नेचर ऑफ सिकनेस, सोर्स ऑफ सिकनेस को अवॉइड करते हैं ओल्ड स्कूल वाले. ओनली द रिजल्ट ऑफ सिकनेस वॉज फेल्ट एंड विद द फिंगर्स, सीन विद द आइज एंड ऑब्जर्व बाय द सेंस थ्रू इंस्ट्रूमेंट. मतलब जो रिजल्ट ऑफ डिसीज़ को ही कंसिडर करते हैं, जो फिंगर्स के द्वारा फील कर सकते हैं, जिसको आइज से ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसी को ही इंस्ट्रूमेंट से मेज़र कर सकते हैं, उसी को मानते हैं ओल्ड स्कूल वाले. मीनिंग ऑफ restoration of the health was confined to relief in the ailments of the particular organs where they appear. Drugs were used in the crude form. ओल्ड स्कूल का ही पढ़ रहे अपन कि ओल्ड स्कूल में ड्रग्स क्रूड फॉर्म में यूज़ होते हैं. द सिस्टम वाज बेस्ड ऑन द इंटायरली ऑन एक्सपीरियंस. ओल्ड स्कूल किस पे बेस्ड है? एक्सपीरियंस पर बेस्ड है. डिसीजंस वर मेड ऑन ओपिनियंस ऑफ इंडिविजुअल as different time concern of opinions or hypothesis. Pathological findings formed the basis of diagnosis. The internal of the main, mental and emotional aspect were not considered. Mental और emotional aspect को consider नहीं करते old school वाले. Symptoms, the language of the sickness at the level of the mind, emotion and body were not studied. Mind body के level पे study नहीं करते हैं symptoms को. Every pathological result had its corresponding bacteria. Doctrine of vital force had no place for them. Prime importance was given to the organs of the man and not to the man himself. तो प्राइम इम्पोर्टेंस ऑर्गन्स को दिया जाता है, मेन को इम्पोर्टेंस नहीं देते. होम्योपैथिक फिलोसफी की हाइलाइट्स क्या है? अच्छा, व्हील और अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैन को भी स्टडी नहीं करते हैं वो. अब यहाँ पे फ़िलोसफी की बात की है, तो होम्योपैथिक फ़िलोसफी में क्या क्या बताया? डॉक्टर हैनीमैन प्रूव्ड द ड्रग ऑन द हेल्दी ह्यूमन पे, हेल्दी बॉडीज़ पे प्रूव किया डॉक्टर हैनीमैन ने. ही फाउंड दैट द ड्रग अफेक्टेड द माइंड एंड द इमोशन ऑफ द बॉडी एंड इफेक्ट आर एक्सप्रेस्ड थ्रू सिम्टम्स एंड मोडालिटी. तो जो ड्रग है वो माइंड और बॉडी को अफेक्ट करता है, इमोशंस को अफेक्ट करता है, और एक्सप्रेस कैसे होगा? सिम्टम्स के रूप में, मोडालिटीज़ के. So he also found that these drugs in the potency are able to remove the similar sickness. Dr. Kent interpreted and explained the various aspects of the Hahnemann organ of the healing art. His lectures are so vivid that they mirror the fundamental law of health and healing to the mankind at the high level of understanding. The book was written about 90 years ago, but still concept of hold true इन द प्रेजेंट टाइम. ही वॉज एम्पेरिकल हैनीमैन. तो एम्पेरिकल हैनीमैन बोलते हैं डॉक्टर केन को. 2 मार्क्स में आता है एम्पेरिकल हैनीमैन. ही कुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द डेविएशन फ्रॉम द प्रिंसिपल्स. की नोट्स ऑफ द फिलोसफी. मैन इज़ व्हील एंड अंडरस्टैंड एंड द हाउस विच ही लाइव्स इन हिज बॉडी. तो मैन क्या है? व्हील और अंडरस्टैंड, और हाउस जो है वो उसकी बॉडी है. द ऑर्गन आर नॉट द मैन इज़ प्रायर टू द ऑर्गन्स. द ऑर्डर ऑफ सिकनेस एज वेल एज द ऑर्डर ऑफ क्योर is from man to his organ. The real sick man is prior to the sick body. Man is sick prior to localization of disease. When we wait for localization, the result of disease have rendered the patient incurable. Symptoms are but the language of nature. Symptoms को language of nature कहते हैं. Crude drugs cannot heal the sick, and that what change the effect are not real but only apparent. क्रूड ड्रग सिक को हील नहीं कर सकता, उसके रिजल्ट जो है रियल नहीं होंगे, अपेरेंट होंगे. टिश्यू चेंजेस जो होते हैं आर ऑफ द बॉडी आर द रिजल्ट ऑफ द डिसीज़. दे आर नॉट द डिसीज़. टिश्यू चेंजेस रिजल्ट ऑफ डिसीज़ है, डिसीज़ नहीं है. बैक्टीरिया आर द रिजल्ट ऑफ डिसीज़. डिसीज़ काज आर मोर सब्टल. द रेमेडी विच विल प्रोड्यूस ऑन हेल्दी मैन सिमिलर सिम्टम is the master of situation, is the necessary antidote, will overcome the sickness, restore the will and understand to order
एंड क्योर द पेशेंट। तो रेमेडी जो हेल्दी ह्यूमन में सिमिलर सिम्टम प्रोड्यूस करती है वो डिसीज पर्सन को ठीक कर सकती है, विल अंडरस्टैंड को। मैन कंसिस्ट इज in what he thinks and what he love and there is nothing else man. Physician has to pursue in the disease that which is to be cured and that is through totality of symptom. Totality of symptom को consider करना है, जो pursue किसको करना है, totality of symptom को। He has to pursue the nature of disease and nature of remedy. Nature of disease and nature of remedy को pursue करना है। Experience has only confirmatory place, it cannot take place of the science and truth. All the true diseases of the economy flow from center to circumstance. All miasm are the true disease. The active cause is within and the apparent cause of sickness is without. If a man has no deep miasmatic influence, outer cause will not affect him. Homeopathy has two parts, the science of homeopathy and the art of homeopathy. One has to learn the art of homeopathy to prepare himself for the application of science of homeopathy. Vital force is constructive, formative, and in its absence there is death and destruction. Every human being has its atmosphere or aura. Everything in the universe has its aura. Every star, planet has its aura. The remedy to the homeopathy must be similar in quality and similar in action to the disease cause. As soon as the internal economy is deprived in any manner of the freedom, death is threatening. Where freedom is lost, death is sure. Freedom loss होगी तो death हो जाएगी। Potency should shoot varying susceptibility of the sick man. Any more than just enough to supply susceptibility is surplus and dangerous. Human race has been greatly disordered in the economy because of drug taking. Primitive cause is not the bacteria. Bacteria themselves have a cause to appear survive. Oversensitive patients are actually poisoned by the inappropriate administration of potentized medicine. The chronic miasm are complicated with the chronic drugging and its effect upon the vital force. The physician who can only hold his memory of the symptom of the disease or remedy will never succeed as a homeopath. तो रिकॉर्ड कीपिंग से यहाँ बताया कि रिकॉर्ड कीपिंग जरूरी है। Impossible to test homeopathy without learning how to get the disease image so before the eyes that homeopathic remedy can be selected. अब प्रोसेस को जानना पड़ेगा, है ना, उसके बिना अपन समझ नहीं सकते। It is unaccountable therefore that some of our homeopathic practitioners make use as a palliative that are so detrimental to the patient. Palliative use करते हैं, mongralism हो गया ये। Do not prescribe until you have found the remedy that is similar to the whole case. जब तक whole case के लिए similar ना हो तब तक prescribe नहीं करना है। It is impossible to test without the learning how to get the disease image. मतलब disease की image कैसे लेना है इसके बिना आप इसको prescribe नहीं कर सकते। डॉक्टर केन फिलोसफर थे, साइंटिस्ट थे, scientist of high order in the world of medicine. He had dream of achievement in the ideal to fulfill, and but he was too strict and could not anticipate the practical aspect and fate of the science when practiced on a mass scale all over the world. During his own time, he could not find the sufficient number of physicians who could practice within the framework of philosophy and bring success and glory in the science. While our great pioneers wanted a dose of single remedy to given after being fully satisfied with the totality of symptom, appropriate potency without unrequired repetition, we find today the people are using mixtures of various remedy without consideration of symptom of allopathic pattern. Allopathic pattern में practice कर रहे हैं, जिससे डॉक्टर केन काफ़ी निराश थे। ठीक है, तो बट ग्रेट पायोनियर हैज़ लेफ्ट अ मैसेज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी with the next generation. While homeopathy itself is a perfect science, its truth is only partially known. The truth itself relates to the divine and knowledge relates to the man. It will require a long time, therefore physician become genuine master in this truth.